Good morning to our lovely students. I am NK Jha from APS. Today we shall discuss the first chapter, A Triumph of Surgery, is from Footprints Without Feet. Before this classes, we have studied the chapter A Letter to God and the poems, and after that the second chapter, Long Walk to Freedom. Very interesting chapter that was. I mean to say you have completed and you have understood the facts of Nelson Mandela, and today we shall discuss A Triumph of Surgery, which is written by James Herriot, and how he expressed his views and what was his character in this story, A Triumph of Surgery. We have to know. It is essential. Okay, so firstly I want to tell you, you will have to learn glossary, which is already given in page number 6. Very important, that is, and I mean to say, it will help you more and more to understand the theme and the story of A Triumph of Surgery, and you will able to understand the whole story, and after that you can express your views according to the nature of the topic, A Triumph of Surgery. Okay, so let us start, and this is your work, how to maintain and how to learn glossary. It's too important for all of you, so learn it. Okay, now have to understand and have to focus on it. And so firstly, we have to understand the key points of this story, A Triumph of Surgery. Triumph means victory, and surgery is related from here, hospitals. Okay, so Tricky, this is the name of the dog, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. मतलब वो छोटा सा एक कुत्ता होता है इस स्टोरी में, जिसको उसके मालकिन जो अमीर होती है, वह जो है सो अत्यधिक खाना खिलाती है. He falls seriously ill and his mistress consults a veterinary surgeon. वह जो है सो बहुत ही सीरियसली बीमार पड़ जाता है कुत्ता, that means Tricky. His mistress consults a veterinary surgeon. एक जानवर के डॉक्टर से उसके जो मालकिन है कुत्ते की, वह जो है सो मिलती है. Does we perform an operation? Does the dog recover? कि क्या कुत्ते का ऑपरेशन किया जाएगा, मतलब कुत्ते का ट्रीटमेंट किया जाएगा, या डज द डॉग रिकवर, या कुत्ता जो है सो रिकवर होगा, क्या कुत्ता रिकवर हो सकता है. वी हैव टू नो हाउ द स्टोरी गोइंग ऑन एंड व्हाट द सर्कमस्टांसेज इज क्रिएटेड इन फ्रंट ऑफ द वेटनरी डॉक्टर्स and the mistress of Tricky. So let us start, and before this read and find out why is Mrs. Pumphrey worried about Tricky. Who is Pumphrey here? Pumphrey is mistress of a small dog Tricky. Number 2, what does she do to help him? Is she wise in this? उसने उसकी मदद किस तरह से की. इज सी वाइज इन दिस, और वह जो है सो क्या बुद्धिमानी की काम की. यू हैव टू
express your views after study the story. And number 3, who does I refer to in this story? I जो है सो किसके लिए रेफर हुआ है इस स्टोरी में? We have to find out, we have to search. Let us start now. The story. I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. Who is I here? I is a veterinary surgeon. I is a narrator. I is a narrator. Was really worried. बहुत ही चिंतित था अबाउट ट्रिकी को देख करके, ट्रिकी के बारे में, ट्रिकी का कंडीशन के बारे में देख करके, ट्रिकी को देख करके वह बहुत ज़्यादा जो है सो दुखी हो गया. आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट. मैंने अपने कार को रोका. पुल्ड अप मीन्स हेयर स्टॉप्ड माई कार व्हेन आई सॉ हिम in the street. This was the statement of veterinary doctors. When I saw him, जब मैंने उसको देखा, किसको? ट्रिकी को. in the street with his mistress, कि स्ट्रीट में किसके साथ? अपने मालकिन के साथ. and I was shocked at his appearance. I became too shocked. I became very sad to see the appearance of Tricky. He had become hugely fat because he was not well, and he was very fat, like a bloated sausage. Sausage is the word, and it means finely minced meat stuffed into long cylindrical cases and divided into small lengths by twisting or trying. With a leg at each corner, मतलब उसकी जो शरीर की बनावट थी वो अजीब सी हो गई थी मोटापा के कारण. His eyes bloodshot and rheumy. His eyes bloodshot. ब्लडशॉट मीन्स उसके आँखें लाल लाल हो गए थे. किसके? ट्रिकी के, कुत्ते के. एंड ह्यूमी मीन्स अ वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम अ म्यूकस मेम्ब्रेन स्पेशली ऑफ द नोज और आइज, दैट इज नॉन एज ह्यूमी. ओके, तो ट्रिकी के नाक से पानी गिर रहा था. ओके, stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. लोल्ड मीन्स लटकना. लोल्ड मीन्स लटकना. अब किस चीज़ का लटकना? कुत्ते का जीभ. कुत्ते को आपने देखा होगा वो जीभ किस तरह से जो है सो बाहर निकाल करके लटका देते हैं. ठीक उसी कंडीशन में बीमार कुत्ता ट्रिकी भी अपने जीभ को जो है सो लटका रखा था. तो दिस इज द कंडीशन ऑफ डॉग. दिस इज बैड कंडीशन. सो अथर द नरेटर is thinking about Tricky. He was very shocked to see the Tricky condition. Mrs. Pumphrey is the mistress of Tricky, hastened to explain. He was so listless, Mr. Harriot. He seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition. Mrs. Pumphrey explain कहती है he was so listless, that means he was looking so weak. Mr. Harriot, he seemed to have no energy. I feel he has no energy. I thought he must be suffering from malnutrition. और मैंने सोचा, आई यहाँ पर मालकिन है, पंफ्री है, तो मैंने सोचा कि उससे कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की आवश्यकता है जिससे कि उसको एनर्जी प्रदान हो. तो इसलिए मुझे महसूस हुआ कि वो मेल न्यूट्रिशन से सफरिंग हो रहा है, मतलब बीमार है.
so I have been giving him some little extra between meals to build him up. इसलिए हमने उसको मिल्स के बाद कुछ एक्स्ट्रा फूड जो है सो दिया. Some malt and cod liver. Malt means like Horlicks. Okay, cod liver oil. cod liver oil दिया. Cod liver oil कैसा ऑयल होता है? You have to think about it. तो you have heard the name of the fish cod. एक कॉड नाम की समुद्री मछली होती है. उससे जो उसके लीवर से उससे जो ऑयल निकलता है उसको हम लोग कॉड लिवर ऑयल कहते हैं. ओके, एंड बॉल ऑफ हॉर्लिक्स. और उसे रात को सोते समय हम एक कटोरी जो है सो हॉर्लिक्स भी दिया करते थे, जिससे कि उसको टू मेक हिम स्लीप, अच्छी नींद आए. दिस वॉज माई थाउट. दिस वॉज पम्फ्रीज थाउट, एंड शी इज एक्सप्लेनिंग इन फ्रंट ऑफ हैरियट, in front of veterinary doctor, and here the veterinary doctor is a narrator. Clear? Nothing much really. तो ये तो मैं कुछ ज़्यादा ही नहीं दे रही हूँ. And did you cut down on the sweet things as I told you? Now narrator is asking कि मैंने आपसे कहा था कि इसको जो आप स्वीट खिलाते हो, मीठा खिलाते हो, क्या उसमें आपने कुछ कमी की? That's the meaning of this line, and it is referring, and did you cut down on the sweet things as I told you? Okay. Oh, I did for a bit, but he seemed to be so weak, I had to relent. He does love cream cakes and chocolate, so I can't bear to refuse him. So Tricky is a faithful dog, but on the other hand, I couldn't prevent it, and I mean to say, he used to love cream cakes. That means Tricky used to love cream cakes and chocolates, so I can't bear to refuse him. और इसलिए मैं उसको मना नहीं कर सकी. I looked down again at the little dog. That was the trouble. Tricky's only fault was greed. He had never been known to refuse food. He would tackle a meal at any hour of the day or night, and I wondered about all the things Mr. Pumphrey hadn't mentioned. I looked down again at the little dog. I, the narrator, ने लिटिल डॉग को फिर से देखा. दैट वॉज द ट्रबल. परेशानियाँ थी. ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रेट. ट्रिकी की गलती सिर्फ इतनी थी कि वह लालची था. किस तरह का लालच था उसके अंदर? ही हैड नेवर बीन नॉन टू रिफ्यूज फूड. उसमें खाने की बहुत ज़्यादा ये थी कि वह जो भी खाना जब भी आए, जैसा भी आए, मतलब वो खा लेगा. दैट वॉज द ग्रेट in him. Okay, so he would tackle a meal. और वो खा तो लेता है और टैकल भी कर लेता है. टैकल मीन्स हैंडल कर लेता है. ओके, मेंटेन कर लेता है. a meal at any hour, चाहे किसी भी समय उसे मिले खाना, चाहे वो दिन हो चाहे रात हो, लेकिन वो लालची है, बिल्कुल लालची है. and I wondered about all the things. This was the narrator statement, and I wondered about all the things. मुझे आश्चर्य हो रहा है. Mrs. Pumphrey had not mentioned. Mrs. Pumphrey ने इन सब बातों का जिक्र हैरियट के सामने नहीं किया. Are you giving him plenty of exercise? Again the narrator asked to Pumphrey, the mistress of little dog. Are you giving him plenty of exercise? क्या आप इसे एक्सरसाइज दे रही हैं, करवा रही हैं? Well, he has his little walks with me, as you can see. Mrs. Pumphrey is telling and replying. हाँ,
he has his little walks, थोड़ा बहुत जो है सो वॉकिंग कर लेता है विद मी, मेरे साथ, एज यू कैन सी, जैसा कि आप देखते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं या देखते हैं. बट Hawking, the gardener, this is the name of the gardener, Hawking. The how much character is coming in front of you? Number 1, Tricky. Number 2, Harriot. Number 3, Pumphrey. Now, number 4, Hawking, the gardener. Okay, so remember it. The character's name has been done with lumbago, so there has been no ring throwing lately. Okay, lumbago. Lumbago means muscular pain in the lower part of the back, that is known as lumbar region. Okay, this is known as lumbago. मतलब मस्कुलर पेन होता है, और वो पेन जो होता है सो कहाँ, लोअर पार्ट, बैक जो हमारा पीठ है उसका जो लोअर पार्ट है वहाँ होता है, that is known as lumbar region. Okay, so by the help of science teacher you can understand very accurately, because you are already in class 10 and have to focus on it, because word meaning is very very essential. Okay, he has his little walks with me, as you can see, but Hawking the gardener has been done with lumbago, so there has been no ring throwing lately. Okay, तो हैज़ बिन डॉन विद लम्बागो, उसका जो गार्डनर है उसके मतलब बैक के लोअर पार्ट में पेन रहता है, सो देयर हैज़ बिन नो रिंग थ्रोइंग लेटली. ओके, आई ट्राइड टू साउंड सीवियर, नाउ आई रियली मीन दिस. इफ़ यू डोंट कट हिज फूड, राइट डाउन द एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज गोइंग टू बी रियली इल. ओके, मैंने इसके साउंड को सुना है, टीके के साउंड को सुना है, वह जो है सो काँप रहा है. दैट मीन्स इट इज रेफरिंग ही हैज नो मोर एनर्जी, दैट मीन्स ही इज इल. नाउ आई रियली मीन दिस, मैं जानती हूँ इस बात को. इफ़ यू डोंट कट हिज फूड, अगर तुम उसके फूड में कटौती नहीं करोगी, write down and give him more exercise, he is going to be really ill. उसे ज़्यादा से ज़्यादा अगर एक्सरसाइज नहीं करवाओगी तो वह निश्चित रूप से बीमार हो जाएगा, और इट सिम्स कि वह बीमार हो रहा है. यू मस्ट harden your heart and keep him on a very strict diet. तुमको अपने आप पे काबू करना पड़ेगा, काबू रखना पड़ेगा, और उसे जो है सो डाइट बड़ा सावधानी से देना पड़ेगा, बिकॉज इट विल मोर रिकवर टू हिम, बिकॉज ही इज फॉलिंग वेरी इल. सो टेक केयर ऑफ ट्रिकी, बिकॉज ही इज पासिंग थ्रू वेरी क्रिटिकल सिचुएशन. मिसेस पंफ्री wrung her hands. Oh, I will, Mr. Harriot, I am sure you are right. Mr. Pumphrey is telling now, oh, by sadness, I will, मैंने किया. Mr. Harriot, I am sure you are right, कि मैं बिल्कुल ही किया, और मैं यह समझ सकती हूँ कि आप जो बोल रहे हैं आप बिल्कुल सही हैं. बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, लेकिन यह जो है सो बहुत ही डिफ़िकल्ट है. यह जो है सो बहुत ही डिफ़िकल्ट है. इट इज़ सो डिफ़िकल्ट फॉर मी. ओके, शी set off, head down along the road as if determined to put the new rhythm into practice immediately. Rhythm means prescribed course of exercise and diet. Then in all circumstances, Harriot is telling you have to determine to put the new rhythm into practice immediately. So इसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा. अगर आप इस कुत्ते के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, मतलब ट्रिकी के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, आई थिंक he will fall ill seriously. Okay, so this was the story
beginning a story of a triumph of surgery, and you have studied about the tricky condition and how Mrs. Pumphrey take care on it, and how Mrs. Pumphrey consult with the narrator, and he is playing a major role here as a doctor, veterinary doctor. So in this circumstances, the condition is not good of tricky, and a lot of advice given by the narrator, given by the speaker, given by the author, and I mean to say the doctor wants to recover tricky as soon as possible by cutting foods, by the help of exercising, and I mean to say it will help more and more to recover the dog tricky. So in next class I will explain from I watched their progress to I know a cure for you, and this is given in page number 2 and 3, and as a homework you have to read it, and I mean to say you will have no any problem for understanding the topic A Triumph of Surgery. Okay, thanks.